Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will discuss about the pH of solutions. Uh, Before going to discuss the pH of solution, I would like to discuss the previous topics in few words. In the previous sections, we have discussed the different theories of a certain basis. Previous theories are Arrhenius theory, Lowry-Bronsted theory, Lux-Flood concepts, and so many other concepts have been discussed. After discussing the different theories and their examples and their limitations, now I would like to discuss the pH of a solution in few words because it is also a related topic with the acidity or basicity. pH or pH is a scale that is used for measuring the concentration of hydrogen ion, or it is a scale. pH is that scale that used for measuring the concentration of hydroxyl ion. In chemistry, pH is a measures of the acidity or basicity of an aqueous solution. And we know that a solution having pH less than 7 is considered to be an acidic solution, and those that have higher than 7 pH values will be considered as a basic solutions. While solutions having an exactly rightly equal to 7 is said to be a neutral, and usually pure water have a pH value of equivalent to 7, and it is considered to be neutral. Actually, and pH is usually the inverse. Its value is inverse of pH. Like pH less than 7 will be considered as a basic solutions, and higher than 7 will be considered as an acidic, while pH exactly rightly equal to 7 will be considered as a neutral. pH scale is a traceable to a set of standard solutions. मुख्तलिफ standard solutions को हम trace कर सकते हैं. इनकी acidity और basicity को हम trace कर सकते हैं. Trace कर सकते हैं mean किसके एक compound की pH और pH find out करने के बाद हम बता सकते हैं कि solution acidic या basic या neutral character possess करता है. और जैसे कि प्रीवियस सेक्शंस में मैं बता चुका हूं कि पीएच वैल्यूज 7 से 7 से कम हो तो इसको एसिडिक कंसीडर किया जाए, ज्यादा ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन को बेसिक कंसीडर किया जाए. So that's why a pH scale is a traceable for a set of standard solutions. मुख्तलिफ standard solutions को हम trace कर सकते. Primarily, pH standard values are determined using a concentration cell with a transference. एक समाना था. pH standard values are determined using a concentration cell. Concentrated cells को हम use करते थे with a transference. और इस concentration cells की हम क्या चीज? By measuring the potential difference between a hydrogen electrode and standard electrode. Standard electrode and hydrogen electrode के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर कर देते थे, और इस पोटेंशियल डिफरेंस से हम बता सकते थे कि भाई व्हाट्स द pH ऑफ द सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से मुराद है कि सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था, that usually called as the pH of a solution. The measurement of pH for an aqueous solutions uh, can be done with a glass electrode
ग्लास इलेक्ट्रोड से भी pH of a solution find out कर सकते हैं. And pH can also be measured on using pH meter. इसी तरह pH can also be measured on using an indicators. यानी pH of a solution measure करने के लिए इंडिकेटर भी यूज किया जाते हैं. इंडिकेटर क्या है? लिटमस पेपर. एक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप किया जाते हैं. लिटमस पेपर निकालने के बाद हमारे पास पीएच कलर चार्ट होते हैं. उस कलर चार्ट के साथ हम कलर ऑफ द इंडिकेटर या पीच पेपर मैच करके बता सकते हैं कि व्हाट्स द पीच ऑफ अ सॉल्यूशन. पीच मीटर अ सिंपल अ पेन टाइप यूनिट है. आमतौर पे पेन टाइप भी है, डिफरेंट भी हो सकती है. उस पे एक डिजिटल वैल्यूज जो है जब हम सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो डिजिटाइज वैल्यू आ जाती है पीच की और अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं व्हाट्स द पीच. वी कैन टेक अ डायरेक्ट वैल्यू एंड अ ग्लास इलेक्ट्रोड लाइक प्रीवियसली हमने जिस तरह के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स. तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड्स भी हम यूज कर सकते हैं पीच फाइंड आउट करने के. Definitions of pH, pOH, and pKw, pKa, pKb. Yes, we know about pH stand for power of hydrogen ion concentration, pOH power of hydroxyl ion concentration. P is an operator and that can be used as a negative log of something, a negative log of any quantity. P mean P shows negative log of any quantity. So if we say pH, the negative log of hydrogen ion concentration. And if we take pOH, it may be defined as negative log of hydroxyl ion concentration. अगर हम P के W लें, तो P is an operator that can be utilized as a negative log. So pKw means negative log of Kw, and similarly pK negative log of Ka, negative log of K. सो ये P जो है इसमें टर्म P आमतौर पे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration, but it is a term that can be also used. It is an operator that may be used as a negative log of any quantity. So P as a factor is defined as log of whatever quantity that follows the symbol. P is an operator. It's communicate the instruction to calculate the negative log of any quantity that follows the symbol. Like देखे, if we take the pH, so we can define them as a pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration. लेकिन अगर हम pOH ले लें तो P is here and pOH P is an operator of negative log of, so negative log of OH negative log of hydrogen ion concentration. ठीक है. So यहाँ पे हम pH है तो pH mean negative log of hydronium ion concentration or hydrogen ion concentration. ठीक है. So pH negative log of hydrogen where H plus 1 means the molar concentration of hydrogen ions. So, and keeping in view that P is an operator that may measure negative log of any quantity. So, in this connection, we can define all these terms. Negative log of hydronium ion concentration, pH mean negative log of hydroxyl ion concentration, pKw mean negative log of Kw, negative log of Ka, negative log of K. जी बिल्कुल. So keeping in view the previous slides, we can easily define the pH, pH, pKw, etc. So pH mean negative log of hydroxyl ion concentration, negative log of Kw, pKa mean negative log of Ka, pKb mean negative log of Kb. So ये चीजें जो है ना इस तरह के if you know the operator P, तो P stand for negative log of anything. So pKw negative log of anything is K. Or here in pH, to P is negative log or OH mean of hydroxyl ion concentration. So keeping in view the value of P as an operator which equivalent to negative log of anything, we can easily define the pH, pOH, pKw, pKa or pKb easily. Now in this sections, now we have
water self-ionization. How to undergo the self-ionization of water? Water self-ionization. Water self-ionization mean if we undergo the ionization of water molecules only, that is said to be a self-ionization. If one water molecule ionizes another water molecules, and this is rarely done. This can be rarely done. So water possesses both acidic and basic properties and as amphoteric. ठीक है, क्योंकि ये sometimes acting as an acid, sometimes acting as a base. So in this connection, it is to be considered as an amphoteric. एंड अगर हम इनकी सेल्फ आयनाइजेशन कर देते हैं टू वाटर मॉलिक्यूल्स, जब आप एक दूसरे को आपस में आयनाइज कर देते हैं, सो इट विल गिव अस हाइड्रोक्सिल आयन एंड गिव अस हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोनियम आयन जो है ये हमें देगा. सो दिस बी द व्हाट this be the self ionization. ठीक है, two water molecules ionize each others and give us hydroxyl ion and हाइड्रोनियम आयन. अगर हम इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लें, Kc वैल्यू देखें, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द product divided by concentration of the reactant. So in this connection, association constant Ka will be equivalent to hydronium ion concentration into hydroxyl ion. So the product of concentration of product to that of the product of concentration of the reactant. So we can take the association constant, dissociation constant is Ka, and that is to be written in this form. When as is the usual case, the concentration of water can be assumed to be constant. Concentration of water assumed to be constant. अगर हम इसको constant consider करें, यहाँ पे जो water concentration है, it is considered to be constant. It is as equivalent to H2O. So on multiplying Ka into H2O, concentration of water, so Ka, the product of Ka and H2O concentration will become equal to Kw. ठीक है, अगर हम यहाँ पे KH concentration of H2O constant ले ले, so on multiplying this with Ka, so the product of Ka and concentration of H2O will become equal to Kw. So we can write them, we can इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये Kw के बराबर हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ concentration of the क्या रह जाएगा. So Kw will become equivalent to the concentration of the product of products. Whereas अगर हम water concentration constant assume करें, so this expression may be replaced by this. ठीक है, किस तरह कि अगर Ka को H2O के साथ मल्टीप्लाइड करें, H2O concentration constant ले लें, so Ka और H2O का जो product है that will become equal to Kw. तो हमारे पास सिर्फ ये product रह जाएगा. Now the self ionization constant of water Kw क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन से इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने से मेरे पास जो है Kw के बराबर हो जाएगा. सो ये इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं. तो यहाँ ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है कांस्टेंट क्या है Kw. Kw constant of water, self ionization constant of water, that is Kw. Self ionization constant of water is Kw. That is be shown in the previous equation in the previous slide. So Kw is thus just a special case of an acid dissociation constant. It can be deduced that Kw is equal to 10 raised power minus 14. बिल्कुल self ionization constant of water Kw as a whole equivalent to 10 raised 1 into 10 raised power minus 14 at 24.87 degree C. At this temperature both hydrogen, चूंकि अब इस टेम्परेचर पे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट होता है
और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों का जो है दैट इज 10⁻⁻⁷ और दोनों ये दिस इज द कंबाइंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो ये कंबाइंड कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। सो एज ए रिजल्ट हाइड्रोनियम आयन का अलग कंसंट्रेशन 10⁻⁷ हो जाएगा और सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन का अपना कंसंट्रेशन इंडिविजुअल कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ हो जाएगा। सो इसलिए हम लिखते हैं कि एट दिस टेम्परेचर बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन have a same concentration of 10⁻⁷ mole per liter or per dm³. So in this connection, keeping in view, बल्कि keeping the concentration of both the hydrogen and hydronium ion in the previous equation, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ into हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ ले ले दोनों का, सो Kw से जो है हम Pkw को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं लाइक दिस। अब देखें जी बिल्कुल। नाउ इसी इक्वेशन से जो है वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH like this relationship between pH and pH, power of hydroxyl ion and power of hydrogen ion concentration का आपस में क्या रिलेशनशिप। जैसा कि हम समझते हैं कि द sum of the pH and POH becomes equal to 14. So how we will prove that the sum of the concentration of pH and pH equivalent to protein. So for the equivalent to 14. तो किस तरह pH is sometimes used as a measure of the concentration of hydroxide ion. pH and pH values are derived from pH measurements. And a water solution, the ion product for water is decay. जैसा कि हम समझते हैं कि the product of concentration of hydronium ion and hydroxide ion is equal to Kw and its combined concentration is equal to 10⁻⁻14. Now take negative log of both sides. So negative log of hydrogen ion concentration according to logarithmic rules, the product will become equal to plus. So ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये चूंकि प्रोडक्ट है तो इसको प्लस हाइड्रोक्साइड आयन की नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और इसी तरह Kw का भी नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। सो नेगेटिव लॉग ऑफ Kw जिसको हम Pkw लिख सकते हैं, और नेगेटिव लॉग ऑफ Kw की जगह अगर हम ले लें नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁴ भी ले सकते हैं। So negative log of hydrogen ion concentration equivalent to pH and negative plus is here, and negative log of hydroxide ion equivalent to POH, and similarly log of 10⁻⁻14 will become equal to 14. किस तरह माइनस, और ये जो पावर है इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस इंटू -14 into log of 10. So log of 10 is equal to 1. जिस तरह की जिसको मैं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे इसको हम यू लिख सकते हैं नेगेटिव, ओके नेगेटिव log ऑफ इसको 1 तो छोड़ 1 is equivalent to 0, नेगेटिव log ऑफ 1 is equal to 0. सो नेगेटिव ये log इसको लॉगरिथमिक रूल्स अप्लाई करने से माइनस और -14 into log 10. Okay, now 14 multiplied 14 is equal to 14 plus 14 हो जाएगा, और log 10 is equal to 1. So this will become equal to 14. So इसलिए हम लिखते हैं कि, और यहाँ पे जो हमने नेगेटिव लगा हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्विवेलेंट टू पीएच, और इसी तरह प्लस नेगेटिव log of hydroxyl ion equivalent to POH. So the sum of pH and pH become equal to 14. So in this way we can prove the sum of pH and
pH values. So how to find out the relationship between pH and pH, and its sum is equal to 14. So this is a way of finding out some of the values of pH and pOH. Okay, now I think so. This is the last slide for today lectures, and this is sufficient for today. Inshallah, we will discuss in near future other section of the pH scale. Thank you so much. Allah Hafiz.